भोपाल में FAO किंग भूमि बोल पुरस्कार प्राप्त ICAR भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान ने विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर 2024 को मनाया। मिट्टी की देखभाल, उपाय, निगरानी और प्रबंधन के नारे के साथ ही ये मृदा स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। बहुत जोश और उत्साह के साथ संस्थान ने स्कूली बच्चों को शिक्षित करने और मृदा स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मानवता के लिए मिट्टी की देखभाल थीम पर कृषि शिक्षा दिवस मनाया है। इस दिशा में संस्थान ने स्वास्थ्य जीवन के लिए स्वास्थ्य मिट्टी विषय पर निबंध और ड्राइंग प्रतियोगिता आयोजित की। 5 दिसंबर 2024 को आम लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए संस्थान से नजदीकी परिसर तक मार्च पास्ट का आयोजन किया है। क्या मिट्टी को बचाने के लिए एक्चुअली हम अकेला जो साइंटिस्ट है या स्टूडेंट है या पॉलिटिशियन है या हमारा जो किसान भाई है, अकेला कुछ नहीं कर सकते। हम सबको मिलके ऑल कर्नर से कंसर्टेड एफर्ट करना चाहिए और तभी हम मिट्टी को बचा सकते हैं। मेनली इसमें हम जो ग्रीन रिवोल्यूशन टेक्नोलॉजी को जो सही इस्तेमाल ना करना से जो हमारा सॉइल में डिटोरिएशन हुआ है, डिग्रेडेशन हुआ है, तो उसको रोकने के लिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा जैविक जो खाद यूज़ करना चाहिए और हमको अच्छा पानी जो इरिगेशन सिंचाई जो पानी जो हम यूज़ करते हैं उसको भी अच्छा से अच्छा क्वालिटी की, अच्छा गुणवत्ता की पानी यूज़ करना चाहिए। और जो हमारा सब चीज़ का एक जो कैपेसिटी होता है, बियॉन्ड कैपेसिटी हम किसी चीज़ को एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए। तो कौन से मिट्टी किस काम के लिए और उसी हिसाब से हमको उसको इस्तेमाल में लाना चाहिए। और ये हम चल के अभी जैसे हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर का बारे में बोल रहा है, नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, ये सब हमारा मिट्टी का स्वास्थ्य सुधारना में, इम्प्रूव करना में, बचाना में ये बहुत कारीगर सिद्ध होगा, साबित होगा। इसमें आज तो हम जो आज 5 दिसंबर है, आज वर्ल्ड सॉइल डे है जो हम मना रहे हैं। ये जो हम मनाते इसी दिन क्योंकि थाईलैंड की जो किंग भूमिबल अब्दुल्लादेज उनका बर्थडे है आज। उनने मिट्टी के लिए बहुत काम किया है। उनको हम उनका मेमोरी में उनके रेस्पेक्ट के लिए अभी नहीं है, हम ये आज ही दिन मिट्टी को ये जो विश्व मृदा दिवस हम मनाते हैं और यह आज पूरा हम मनाएंगे। और इस बार हम हमारा इंस्टीट्यूट सॉलिडारेट जो हमारा ये जो NGO है एक, और फिर हमारा इंडियन सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस, नास नेशनल एग्रीकल्चर एकेडमी फॉर एग्रीकल्चर साइंसेस, ये सब इकट्ठे हम आए हैं और आके हम आज के दिन पूरा ये कार्यक्रम करेंगे। और हमारे साथ किसान भाई भी जुड़ा हुआ है, अलग अलग जगह से किसान भाई भी लोग आए हैं। और सबसे बड़ा है जो प्रोफेसर रतनलाल, वो उनको वर्ल्ड फूड प्राइज मिला है और वर्ल्ड फूड प्राइज जो है ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू नोबेल प्राइज होता है वो एग्रीकल्चर और फूड के लिए। वो आज हमारा बीच में है, वो USA से हमारा इधर आए हैं, हमारे साथ शामिल होंगे और ये पूरा कार्यक्रम आज करेंगे। और कल जो है हमारा काउंसिल से जो हमारा डिप्टी डायरेक्टर जनरल डॉक्टर SK चौधरी जी वो आएंगे और सॉलिडारिटी से बहुत उनका पार्टिसिपेंट आएंगे। हम यहाँ पे अपना वैज्ञानिक, साइंटिस्ट और समस्त जो अपना इंस्टीट्यूट की जो स्टाफ है वो भी हम उसमें रहेंगे और रतनलाल साहब का जो लेक्चर भी डिलीवर करेंगे इसमें, जो मिट्टी को कैसे बचाना है, क्या करना है, नहीं करना है। और ये दोबारा मैं पुनः बोलता हूँ, ये केवल अकेला काम नहीं है कि हमारा है या किसान का है या जो साइंटिस्ट का है या स्टूडेंट का है। हम सब मिलके, आप भी हमारे साथ मिलके इसका अवेयरनेस ये प्रोपोगेट कीजिए कि मिट्टी है तो हम है, हमारा प्रॉस्पेरिटी और पोस्टरिटी ये दोनों के लिए मिट्टी स्वस्थ रहना ठीक है, नहीं तो हमारा ये पूरा सिविलाइजेशन ही खत्म हो जाएगा, मिट्टी जैसे डिटोरिएट हो रहा है। थैंक यू। The second was Dr. Hilaire, Daniel Hilaire from Israel. He was a very good friend of mine. He passed away 2 or 3 years ago. I had the honor to write a letter for him for the World Food Prize, and then I received the World Food Prize in 2020.
2020 food prize, it was very special. There was no ceremony, it was. So my feeling was, since there was going to be no ceremony, just give it to anybody. So that's fine. That was the reason I got it. I had to give it to somebody. The next day, somebody who received the award, when the award was being announced, and I was reading about the next recipient, who's again a very good friend of mine. And all of a sudden I could see that the Minister of Agriculture of U.S., Dr. Wilson, Secretary Wilson, he was reading a biography which sounded like mine, and then yes, of course, represented the award at that time, so it was very neat. After we have seen the presentation by Dr. Datta, which I thought was excellent, there is nothing really what I could say which would be very new. But I do want to share with you 10 basic issues that the world is facing now. First of all, the population. It's 8.2 billion and it's increasing 1.14% per year. That comes to about 6.7 million per month and 92.4 million per year. So that's number one issue. It's a very serious issue. India is 1.44 billion out of 8.2 billion, and that population, I think, if we can empower and educate women, can begin to come down. And if we do not follow that route, if the women are not empowered, they're not control of their own destiny, then unfortunately the population may be 10 billion by 2050 or 9.8 billion and more than 11 billion by 2100. So that's the first issue globally. The second issue is per capita land area. Right now, per capita agricultural land area is 0.19 hectare. And if the population continues, it will be less than 0.05 hectare for many countries in South Asia, especially countries in the southern Himalayan region, such as Bangladesh. It might be 0.05 hectare. So that's the second issue. And we need 0.25 hectare per person to meet all the basic necessities of life. So you realize why it is a problem. So the third issue is the land degradation, soil degradation. A recent report, actually about a month ago, from the United Nations Environment Program, which is based in Nairobi, it states that 40% of all land on the planet is already degraded. 40%. And that requires restoration. That's why the importance of the Indian Institute of Soil Science is very, very, very critical. Not only to protect soil, but also to restore soil. So the soil restoration is very critical, as Dr. Datta showed that chart, health of soil, plants, animal, people, planet, all one interconnected. That was a very, very critical part that he presented. That's so restoring soil, 40%, and India has, of course, its own share of land degradation, more than 120 million hectares. Some estimate more than 140 million hectares degraded. Per capita water is the another factor. We have 1,000 cubic meter per capita water availability per person.